Acer Nitro 5600H की अनबॉक्सिंग एंड गेमिंग रिव्यू बनाने के बाद मुझे कई कमेंट्स आए हैं कि आपका जो ये Nitro 5 है 1650 वाला जिसमें 5600H है वो बाकी लैपटॉप के कंपैरिजन में, मतलब बाकी 1650 लैपटॉप के कंपैरिजन में कम परफॉर्म कर रहा है, कम FPS दे रहा है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा था, तो आप सबको डाउट था, तो इसलिए मैंने साइड बाई साइड कंपैरिजन किया है टफ A15 के साथ, जिसके अंदर Ryzen 5 4600H है, साथ में 1650 है एंड मेरे पास 1650 Ti वाला भी है, लेकिन ये 1650 वाले से मैंने कंपैरिजन किया है साइड बाय साइड। तो पहले आप फिर ये 3 गेम्स देख लो, फिर हम बात करते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है, सेम परफॉर्म करता है या बेटर परफॉर्म करता है या कम परफॉर्म करता है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं सब भी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो Acer Nitro 5 Ryzen 5 5600H हमें प्रोवाइड किया है KC इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो KC इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस लैपटॉप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
sound right, boy. It sound right, boy. It sound right, boy. हाँ जी, फिर देख लिए 3 गेम्स। पहले GT5 देख ली, फिर उसके बाद RDR2 भी देख लिया होगा, फिर वैलोरेंट देख लिया होगा। तो GT5 एंड RDR2 में तो आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिली होगी, तो ये तो आपने देख लिया होगा। लेकिन वैलोरेंट में आपने देखा होगा कि हमारा नाइट्रो 5 ज़्यादा FPS दे रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि ये वैलोरेंट जो है ना वो CPU डिमांडिंग गेम है। तो CPU हमारा इसमें 12% पावरफुल है 5600H, जो कि थोड़ा बेटर है। तो जिस कारण हमें वैलोरेंट में FPS ज़्यादा मिल रहे हैं एसर नाइट्रो 5 में। तो बाकी देखो, आप ये भी आपको पता लग गया होगा कि कोई कम परफॉर्म नहीं कर रहा, नाइट्रो 5 बिल्कुल बराबर परफॉर्म कर रहा है, उल्टा CPU डिमांडिंग गेम में बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये आपने देख लिया होगा। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जो भी इसके रिलेटेड था। तो इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।